Hello? Hello, dear students, can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, Yes. we can. Okay. Uh, okay. Hmm. बस सही शो था ना आओ दाओ सर शेयर का dear student, can you see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is the topic? Can you see the Feminism. title? Yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay. बस सही शो फयाज से Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. Today we will talk about feminism, the topic which we have already discussed in the class. But today topic is the extension on their topic, feminism. So we briefly define what is feminism. Can you hear me? Yes, sir. What about the other students? Can they hear me? Yes, sir. Yes, sir. Boys, Yes, sir. uh, Yes, sir. okay. Feminism. It is the belief and social, economic, and political equality of both the sexes, male and female. Broadly, feminism is the ways, it examines the ways in which literature and other cultural productions reinforces or undermines the economic, political, social, and psychological oppression of women. यानी लिटरेचर में जो वोमेन के साथ जो उसके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है या उसकी अप्रेशन या सप्रेशन या अंडरमाइनिंग होती है, सो फेमिनिज्म critiques that. It makes balance, and feminism wants balance in the literature and society and culture between male and woman. Feminism distinguishes between the word sex and gender. So we move to the next slide. What is sex? It is the biological constitution, the distinction between male and female. It's a biological term. Gender basically refers to the roles the woman and man plays in society. It refers to our cultural roles, the male and female, the masculine and feminine. इसका मतलब ये है जेंडर का कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि नहीं कि ये मर्दाना बात कर दिया आपने और ये जो है जनाना बात आपने कर दी या ये आपने मर्दाना काम कर दिया या ये आपने जनाना काम कर दिया. तो दिस इज रोल, इट इज रेफरिंग टू रोल. बाज़ औक़ात आप मर्द को कहते हैं कि आपने तो ये औरतों वाला काम कर दिया. So this is gender. Got it? Yes, sir. Patriarchy. A hierarchical structure society in which men hold more power. Patriarchy means male dominated society. जहाँ पर मर्द जो है डोमिनेंट होता है, वो जो कुछ करना चाहता है अपनी विश अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करना चाहता है. This is patriarchy.
यानी वहाँ पर जो है वोमेन को वो हैसियत या उसको वो राइट्स नहीं मिलते in patriarchal society. This is patriarchy. Patriarchy is sexist, which means that it promotes the belief that women are innately inferior to women. So inferiority complex within the woman in a patriarchal society, this is patriarchy. This belief in the inborn inferiority of women is a form of what is called biological essentialism because it is based on biological differences between the sexes that are considered part of our unchanging essence as men and women. Uh, Sexism, the idea that women are inferior to men, ये तो सेक्सिज्म तो हमारी सोसाइटी में और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वुमेन को तो इन्फीरियर समझा जाता है हमारी सोसाइटी में हो या फैमिली हो कल्चर में हो प्रोडक्शन में हो जो भी हो एनी फील्ड यहाँ पर भी इवन इन वेस्ट टू माइसोगेमी हेटेड ऑफ वुमेन यानी औरतों से नफरत करना बाई मैन नॉट वुमेन यानी मर्दों की तरफ से वुमेन की तरफ से नहीं हाँ माइजोकेमी कल जो है कुछ ग्रुप में ये बात थोड़ी सी डिस्कस हुई थी यू नो इट बेटर मिसेंड्री हेटेड ऑफ मेन transgender a person whose gender identity differs from the cultural expectation of the sex they were assigned at birth transgender you may know in our society transphobia prejudice towards trans people no there are certain types of feminism in the world. So they are liberal feminism, radical feminism, conservative feminism, libertarian feminism, separatist feminism, ecofeminism, Marxist feminism, socialist feminism, black feminism, post-colonial feminism, third world feminism, indigenous feminism, Christian Islamic, etc., etc. So these are the major types of feminism in the world, not particularly in our society, but in the West, in Australia and Asia, Antarctica, America, North America, South America, Europe, etc. So these types of feminism works in these societies. What feminism want? They address normally the issues relating to jobs, education, property, vote, right to vote, health, business, marriage, integrity, maternity leave. Maternity leave is for the government students, the women who they want they desire if they are working in on a government job. So maternity leave is basically for the women official working in a government department. Rape, harassment, dress, etc. ये इशू जो नॉर्मली जो है ये फेमिनिस्ट एड्रेस करते हैं अगर वो जॉब्स में उसको मुश्किलात पेश आ रही है तो वो फेमिनिस्ट आ जाते हैं कहते हैं कि ये तो वोमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि अगर आप एक वोमेन को आप कम तनख्वाह दे रहे हैं और मर्द को ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं और दोनों का जॉब नेचर एक ही है तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन सो इज़ द केस विद एजुकेशन in certain societies like tribal society women are not allowed to get education so feminists address that education that issue of education in a tribal society so the right to property as we have in Islam so even this right to property is there in the Western society too so feminists address these issues too if any discrimination exists between the male and female. The right to vote पे अभी मैं आगे बात करूँगा हेल्थ और बिजनेस में अगर उसको कुछ इशू हैं बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ये वुमेन जो है नर्सिंग जॉब नहीं कर सकती ये जो है बिजनेस नहीं कर सकती ये इंजीनियर नहीं बन सकती या जो है डॉक्टर्स नहीं बन सकती एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं मैरिज में
अक्सर आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिकली हमने देखा है वो वुमेन को जो है कुछ इस किस्म की हकूक़ नहीं मिलते हैं। तो फेमिनिस्ट एड्रेस दीज इश्यूज। इंटेग्रिटी और मैटरनिटी लीव अगर उसको नहीं मिल रही है, रेप हेरेसमेंट एड्रेस, यानी अगर उसने कौन कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कुछ कौन से नहीं पहनने चाहिए। सो फेमिनिस्ट एड्रेस दीज इश्यूज। Are you there, dear students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. E. Feminism in the West. Philosophy, science and social issues developed by the West. ये फिलासफी जो है, जो साइंस की मदर भी है, जो साइंस इससे डेवलप हुआ, और फिर साइंस और सोशल साइंसेस ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप है। वेस्ट ने बहुत डेवलप किया है। हालांकि साइंस जो है इट इज़ द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम्स, बट वेस्ट डेवलप दैट। इट इज़ नॉट द केस इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वहाँ पर फिलासफी साइंस ये चीज़ें डेवलप नहीं हैं। The intellectual product of the West have been influencing the East and third world countries. वेस्ट ने जो तरक्की की है फिलासफी साइंस और सोशल साइंस में, वो बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंसिंग द ईस्ट। और वहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा है। रिसर्च इज द टूल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट। In every field, research is the basic tool, and the West developed on research in every field. Feminism is strong in the West. The credit goes to the feminist movements. The first wave of feminism was started in 19th century and early 20th century. The second wave came in 1960s, and the third after 1990s, and the fourth one is the present one on social media that we have just begun on that fourth wave. फोर्थ वेव में हम अभी जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो आप भी जानते हैं। Okay, next slide. Feminism in history. वोमेन जो है सफ़र होती रही है थ्रू आउट हिस्ट्री। जब एग्रेरियन सोसाइटी थी, ये 10,000 ईयर्स एगो की बात है, फिर स्लेव सोसाइटी आई, फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, फिर कैपिटलिस्ट, फिर सोशलिस्ट आई, फिर कैपिटलिस्ट, फिर ट्राइबल सोसाइटी। सो थ्रू आउट हिस्ट्री men dominated the society. The tools of development were captured by men. वो जो मेल है उसने अपने हाथ में जो टूल्स थे, जो पावर के टूल्स थे वो ले लिए थे। वोमेन को साइडलाइन कर दिया, उनको कहा कि आप घरों में ही रहे, आप बच्चे पालें, दिस इज योर ड्यूटी एंड माय ड्यूटी इज टू वर्क outside. So tools of development and the property was captured by men throughout history, and the woman was sidelined. It and resultantly that was suppressed too. Patrilineal descent prevailed. Patrilineal का मतलब है पदराना, यानी जो बाप की तरफ या मेल है उसका मतलब यहाँ पर है कि पदराना जो निज़ाम था वो चलता रहा। वो जो बाप कहता है, जो दादा कहता है, that is true and justified, but what the mother say or the woman said, that is unjustified. Patriarchy flourished, women exploited. Feminists claim when the right to property is abolished, exploitation of women will stop. वो फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर ये राइट प्रॉपर्टी है, यानी अगर प्रॉपर्टी को आप ख़त्म करें अपनी सोसाइटी से, कि इसकी इस मर्द की जो है ये प्रॉपर्टी इस मर्द के नाम है, ये अगर इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया है तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन कैन बी स्टॉप्ड। अब ये सोशलिस्ट भी यही कहते थे कि ये राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी एबॉलिश्ड।
पेट्रियार्की इज अटैच विथ प्रॉपर्टी हेंस विथ फेमिनिज्म। पेट्रियार्की जो है प्रॉपर्टी से के साथ ताल्लुक है, अगर इसको ख़त्म कीजिए तो फेमिनिज्म की भी मसले हल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, राइट टू वोट। New Zealand and Australia are the first states of the world that allowed the right of vote to women in 1893-94। ये पहले ममालिक थे जिन्होंने वुमेन को वोट का हक दिया। यूरोप, though colonialist and imperialist at that time, did not allow the women to the right to vote. It is a wonder for a civilized and democratic Europe। अब 1893 में अगर आप देखें तो यूरोप जो था वो कॉलोनियलिस्ट भी था और एम्पेरियलिस्ट भी था। सारे उसकी कॉलोनीज थी, ये इंडिया की कॉलोनीज थी, अफ्रीकन कंट्री कॉलोनीज, या जो ये साउथ अमेरिका जो है वो कॉलोनीज। तो कॉलोनीज तो इनके हाथ में थी, पावर तो इनके हाथ में था, लेकिन इन्होंने वो वुमेन को राइट ऑफ वोट नहीं दिया। ये वंडर है फॉर ए डेमोक्रेटिक एंड सिविलाइज्ड Europe। With the Bolshevik Revolution in USSR in 1917, ये जो रशिया है, it was the socialist Russia that gave women for the first time the right to vote। अब रशिया जो है ये यूरोप में है, और यूरोप में ये रशिया जो था वो पहला मुल्क था जिसने वुमेन को वोट का हक दिया। This influenced other states of Europe too, and steadily UK, France, Germany and other states followed suit। ये जो जर्मनी, यूके वगैरह, इन्होंने जब रशिया को देखा कि ये तो इन्होंने हक दे दिया, तो उन्होंने भी देना शुरू कर दिया। In the USA, a religious Puritan organization, Quaker, developed the movement that tried to liberate the slaves, the blacks। Their claim slogan was neither God nor Christ preached slavery। यूएसए में एक जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन था क्वेकर, उन्होंने भी जो है वो स्लेवरी, क्योंकि वहाँ पर स्लेवरी थी, ब्लैक एंड वाइट कुछ कंपटीशन या जो राइवलरी थी वहाँ पर, तो ये मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने ये प्रीचिंग शुरू कर दी कि नीदर गॉड नॉर क्राइस्ट प्रीच स्लेवरी। न तो खुदा ने स्लेवरी की वो बात की है कि आप इंसान को स्लेव करें, और न जो है क्राइस्ट ने की है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लेम स्लेवरी एबॉलिश, और जो है एक मूवमेंट चली और उनने सोसाइटी को लिबरेट करना शुरू कर दिया, और इस लिबरेशन में वुमेन की लिबरेशन भी शुरू हो गई फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पेट्रियार्की। In 1919, the USA allowed the right of vote to women। USA ने 1919 में हक दे दिया। अब अगर आप देखें तो 1917 में जो है रशिया आज़ाद हुआ, और 1919 में यूएसए ने वुमेन को हक ये राइट ऑफ वोट दिया। तो ये यूएसए भी जो था वो यूएसएसआर सोशलिस्ट रशिया से मुतासिर हुआ, क्योंकि ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज थे। तो जहाँ पर कोई इस किस्म की डेवलपमेंट हो जो मासेस के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो ये कंट्रीज जो है रिएक्ट करती हैं। द राइट टू वोट स्प्रेड स्लोली इन रेस्ट ऑफ द यूरोप। बाकी यूरोप में बहुत स्लोली जो है ये वोट का जो हक था वुमेन को वो पहला। यूके में 1928 में औरत को राइट ऑफ वोट दिया गया, वुमेन को, और फ्रांस में 1944। Dear students, can you hear me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Even woman was not allowed till 1965 to work without her husband's permission। फ्रांस में जो था 65 तक जो है वुमेन को आज़ादी नहीं थी कि वो जॉब कर सके अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर। तो अब फ्रांस कितना जो है अब वीटो कंट्री है और बहुत डेवलप है, लेकिन 1965 तक जो है ये हाल था उनका, या 1944 में तो उन्होंने औरत को ये राइट ऑफ वोट दिया वुमेन को। बहुत मतलब एक अजीब सी बात है। स्विट्जरलैंड ने जो है 1971 में दिया,
अभी 1971 तो कल गुजरा है। और पाक इंडिया इंडिपेंडेंस जो पाक इंडिया जो 47 में जो डिवीजन हुई सब कॉन्टिनेंट की, उसमें तो 47 से ही औरत को हक दिया गया था। तो सी the divergences and convergences between the Eastern society and the Western society in terms of development. Initially in UK, a woman above 30 and having property was allowed the right to vote. UK में तो जब औरत की उम्र 30 साल से ऊपर थी और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी थी तो उसको जो है राइट ऑफ वोट था, का हक था। उससे अगर वो उसकी 30 साल से उम्र कम है या उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, शी वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम वोट। 10 साल बाद, आफ्टर 10 years इट बिकेम यूनिवर्सल। 10 साल के बाद उन्होंने भी जब देख लिया कि दुनिया जो है आगे की तरफ जा रही है और हम फिर मतलब कि लोग हम पे उंगलियां उठाते रहेंगे, तो उन्होंने एडल्ट वुमेन सुफ्रेज को यूनिवर्सल कर दिया। यानी 21 साल पे ले आए कि 21 साल की जो भी औरत होगी उसको जो है राइट ऑफ वोट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ये जो मेन आर्गुमेंट है इसमें, मैन इज रैशनल, स्ट्रांग, प्रोटेक्टिव एंड डिसाइसिव, एंड वोमेन इज इमोशनल, वीक, नर्चरिंग, सबमिसिव। ये ट्रेडिशनल रोल थे कि मैन जो है वो रैशनल है, वो जो है वो अकल भी रखता है, वो स्ट्रांग है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, बायोलॉजिकल स्ट्रांग है, वो प्रोटेक्टिव है, वो औरत को प्रोटेक्शन दे सकता है, डिसाइसिव है, वो मैन कैन डिसाइड। This was the argument Yes, sir. for a traditional society, and woman was emotional, not rational, and woman was physically weak. It was nurturing and submissive. कि woman जो है वो सब उसको submissive भी होना चाहिए, उसको emotional भी होना चाहिए. She is weak and she should nurture her children. तो ये ट्रेडिशनल रोल्स थे। और इसने क्या किया आगे, दीज जेंडर रोल्स हैव बीन यूज्ड वेरी सक्सेसफुली टू जस्टिफाई इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, सच एज एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम इक्वल एक्सेस टू लीडरशिप। उसको लीडरशिप नहीं दिया कि आप नहीं कर सकती और आप जो है बच्चे पालें। एंड डिसीजन मेकिंग पोजीशन इन द फैमिली, पॉलिटिक्स, एकेडेमिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, उसको ये भी हक नहीं दिया गया कि आप जो है डिसीजन पोजीशन पे आए, फैमिली में कोई डिसीजन ले, या पॉलिटिक्स में आए, या एकेडेमिया में आए, या कॉरपोरेट वर्ल्ड बिजनेस में आए। पेइंग मेन हायर वेजेस देन वुमेन, आदमी को जो है हायर वेजेस तनख्वाह दी जाती थी और वुमेन को नहीं, अगर वो फील्ड में काम करे। कन्विंसिंग वुमेन दे आर नॉट फिट फॉर जॉब इन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, और ये बिलीफ कि वुमेन जो है मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग फील्ड में काम ही नहीं कर सकती, दे आर नॉट फिट। एंड पैट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, दिस वाज द मेजर पिलर ऑफ दैट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। नेक्स्ट स्लाइड। Questions feminist critics ask: what does the work reveal about the oppressions, economically, politically, socially, or psychologically, of patriarchy? How are women portrayed in the work? ये जवाब इसका मतलब है कि आप जब कोई वर्क, कोई नावल को एनालाइज करना चाहे तो आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए। How are women portrayed in the work? How do these portrayals relate to the gender issues of the period in which the novel work was written or set in? Does the work reinforce or undermine patriarchal ideology? And how is the work gendered? Thank you. Dear student, did you get something from this presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, any question? Sir, excuse me. जी You didn't mention any literary works of female writers. Okay, I would mention in the group. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. जी
So, as you said in your lecture, that if the right to property problem is resolved, right? So, Mhm. all the feminist problems would resolve. So, No, can we not say all. that all the problems that women face? Not all. Mhm. Not all. I But sir, didn't. you said that. But sir, I you said that feminists think that if the right to property thing is resolved, so yes. then women will not face this oppression. So can we say that it's not the problem of gender difference, rather it's a problem of money and economy, rather than considering women as oppressed, as weak. Male actually love money and economy. That's why they don't allow other gender to be involved in that particular thing. Yes, you are right. I mentioned in my presentation that it were the socialist that Mhm. premise that view that if the right of property to women is abolished, to men is abolished, so this issue of gender discrimination can be uh, minimized, Resolved. decreased, or abolished to some extent. Okay, sir, the way we see feminism, right, Who are and the you? Who gender are you? difference, What the is your gender name? Who are I you? am Madiha Razik. Madiha Okay, Razik. okay, okay, okay. Please So, carry on. okay, so sir, the way feminism talks about the discrimination of female as compared to male, right? So, Mhm. isn't it the same as colonizers think about colonized people? No, you have moved to the political post-colonial view of the society, but actually we are discussing here feminism. This is something else, and you have your question relates to the post-colonial colonized. But sir, the ideas are the same, right? As the colonizers No, the thought that I'm you are right. The feminist or the post-colonialist have overlapping ideas. You're right. Mhm. Yes, please carry on. Okay, sir, that was my question. That can we say that both these ideas are the same as the way Yes, colonizers think about colonized people? Same is the case with men over here. That in the past, in the history, men used to think about a female the way colonizers think about colonized people, yes, right? yes, Madiha, you are right. Actually, the post-colonialist or the post-colonial writers, they deal with the culture of Okay. society, and feminist deals with the gender of the society. Yes, sir. This is the main difference. Other than this, Yes, all things are same, I yes. guess. Or And one last question, sir. yes, please. Okay. Where is it? I forgot. Okay, sir. You just please carry Biaba on. When I remember, biaba group kita okay, puso sir. Fine. kiza. Take sure. Fine. Ah, Okay, sir. okay. Okay. Boys, Yes, sir. संगा चल दे जी संगा चल दे खैर दे here the sir question sir हाँ here this here this sir कज़ा बियाबा ग्रुप question क्योंकि sir माता पता लड़ा दे Madhya रजी Madhya posit that can we study feminism from post-colonial perspective, sir? why not? I said that post-colonialism and feminism Sir, can have we study feminism from post-colonial perspective? why not? I आवाज mentioned सर सही ना राजी सर उस दर्जी Yes, से we can. zima dawe چې post colonial چې کوم view دی او یا چې کوم د feminist چې کوم views دي د دې views overlapping دي ځکه چې post colonial چې کوم analyzation دی of society هغه کې women خوشته په society کې کنه هغه ډیل کوي هغه اډریس کوي सर women او په Excuse feminism जी सर सर yes yes sir me, sir it's not all the post-colonial, na? It's a part. Like there is just one perspective of post-colonial feminism, as you mentioned in your slides, and you discussed first the branches of feminism. There was a branch post-colonial feminism, so yes it's just a branch.
Yes, I Yes, have sir. mentioned. And one other But sir, question. when sir, if you move to that slide where we see the traditional roles, right? So the Yes. traditional roles, when we see that, so we can clearly point out that this is the same as the view of colonizers and the colonialists, right? The men roles reflects the role of the colonizers in the society, and the Yes. women roles reflect the roles of the slaves or the colonized people in the society. Yes, you So are the right. general idea is the same Sir, one. Yes, yes. But the difference sir, lies with the one more. terminologies and the Yes, jargon. sir, exactly. Mhm. Exactly. Sir, Yes. one Sir, more this third question. wave feminism Sir, one. Shaba is lagnu very much. pare kave khapal num wae. Sir, who should say the name? Me or the You. Who my is brother? uh, asking? This is Marina Abbas. I wanted to Uh, say that third wave feminism relates a lot with the post-colonial work going on in these years. hmm. And Sir Hamid has shared already a lecture on this. And I think if somebody has some problem, then they should go through the lecture Yes. because the third wave feminism is related more to the third world ladies or the women problems, Mm-hmm. and a lot of work is and a lot of writers and authors are working already on it. They are Mm-hmm. viewing this third wave feminism through the lens of post-colonial or the colonial theory view. Yes, yes. Yes, you are right. yes, sir. Sir, one more question, sir. One Mm-hmm. more question, sir. Mm-hmm. Please. Ali, sir. Yes, Sir, please. isn't it true that women is socially, politically, economically, and emotionally fragile? Sorry. Isn't it true? Sorry. Isn't it true, sir? ब्याह हुआ Woman है is ऐसा what? point है Woman is मिस्टर what? So he says that isn't it true that women are fragile socially, politically, and others daily? It is not. It Emotionally. is not no true. no no it is Not not true. We true. are not fragile. It is not true because the existence of feminist theory proves that it is not true. Sir, but nature cannot be denied, sir. I think this is true, sir. How? Everyone Sir, has her or No, his own sir, no. view. The The theory feminist. can't be changed. Listen, please. uh, Feminist yes, sir. focuses Sir, on. Listen, Ali. Feminist ji, sir. focus or address the gender roles. Remember, not biological roles. Did you get my point? Yes, sir. So, in gender roles, Sir, come the political, the social, the economic. Every strata of sir, society come in that. G. Uh-huh. uh, sir, Kumanga history, if we look in history, sir, we Mhm. can find that women is from since time all fragile, emotionally, physically, and psychologically. Mhm. نو دا خبره خو Sir, ځکه she is داسې ده چې تا خو ښځه خو د چې دی سپریس کړې ده په سوسایټۍ کې تھرو آوټ هسټري چې تا سپریس که په کور کې د sir, کیڼ لا ورته ورته چې سبق مو یا ته نوکري مه کوه sir, ته پولیټکس ته مه وځه ته څادر په سړي په مخ کې ده او برکم په سر کا او بهر اډو وځم ما سو یو هیو سپریسډ No, او sir, in دغه a way, we can no, say no, he's sir. saying the right thing because, like, two women testimony in the court or trial is equal to one male testimony. So, emotionally, she has been even in Quran, she has been called you are emotionally right weak. I agree with you but what about the Western society whether this argument exists in the Western society or not. Sir, That's the why Western post-colonial society is writers. running by rational capacity, No, sir, and we are no, not running on our rational capacity. We follow. no. You should project the whole world, not a particular society. Yes, sir. We have Islamic society, it's okay, but we care for our society, for our culture, for Yes, sir. our religion, Islam. आवाज क्लियर ना जी सर इंटरनेट के जोड़े प्रॉब्लम जी सर اوس زما خل څه ایشو دلته راغلی د پکې
Roro Razi. Sir, your voice is very much clear to us. I guess this is the internet problem on his side. Dab Ali stap di dago pati kam kar kita nasi kam de gita. Kam de ke nasi usa. Ali, where are you at this moment? Ali can't hear me. Excuse me, sir. Yes. Sir, can we, it's again Madiha Razik. So can Mhm. we relate the theory of feminism, right, to the theory of humanism? Theory of humanism. Humanist, yes, sir, humanist theory. Yes, why not? It is Because, sir, it also overlapping. talks about equality. Yes, Yes, sir. it is overlapping. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay.